नमस्कार। हिंदी संवाद न्यूज के इस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अजय मिश्रा आज इस विषय पे परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे हर एक इंसान को आहत कर चुका है। जिनमें मानवता बची है वो आंतरिक रूप से न केवल दुखी है, बल्कि ये कल्पना और परिकल्पना में व्यस्त हैं कि क्या ये वही भारत देश है जहां पे लोग एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। ये वही भारत देश है जहां दधीची ऋषि पैदा हुए, जिन्होंने अपनी हड्डियों से राक्षसों का संहार किया। या ये वही देश है जहां आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर लड़े। ये ऐसी बहुत सारी बातों पे लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, लेकिन अंतर मन से बेहद दुखी हैं। आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर हत्याकांड की कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। राजनेता जिम्मेदार हैं, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, धर्म जिम्मेदार है, या व्यक्ति और व्यक्तित्व जिम्मेदार है, या बहुत सारी बातें हैं जो कहने और सुनने को है, जिनमें वास्तव में जिम्मेदारी किसकी सुनिश्चित की जाए। आज इस विषय पे चर्चा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं परिचय करा दूं। आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है कि आपने अपने अमूल्य समय से समय दिया हिंदी संवाद को और इस विषय पे चर्चा करने के लिए। डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव साहब हैं, अयोध्या से, आप देख रहे हुए हैं। सामने स्क्रीन पे आलोक सर हैं। उनके जस्ट बगल में श्री अमित बहादुरी साहब हैं। आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हैं और भारत की कई गतिविधियों पे निगाह जमाए हुए हैं और देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और लोगों के उन्मूलन के प्रतिबद्ध हैं। हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा से ओतप्रोत हैं और बहुत सारी बातों को कहना सुनना चाहते हैं और खुद आए हम लोगों से जुड़े हैं, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं उनका। साथ ही हमारे श्री राजेंद्र मिश्रा साहब हैं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट लखनऊ से और सामाजिक के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और न्याय प्रणाली में भी कहाँ ऊंच नीच हो सकती है उस विषय पे भी गहरी पकड़ रखते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कमलेश यादव जी हैं। आप बहुत सारे शिक्षकों के समूह के नेतृत्व कर रहे हैं और इस विचार के साथ लगे हुए हैं कि इसका विकास और हो सके, उस शिक्षकों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही दीपक तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से मुस्कुराते हुए थोड़ा देर से जुड़े हैं और बहुत ही सीनियर हैं और विषय को बहुत गहराई से समझते हैं। जो विषय हम लोगों ने आज चुना हुआ है, जिस विषय पे हम चर्चा पर चर्चा करने के लिए आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम परिचय खुद कराना चाहेंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अमित साहब से। कन्हैया लाल वास्तव में एक टेलर थे उदयपुर में और वो टेलरिंग का काम करते थे। नुपुर शर्मा का जो विवाद पूरे देश में चला था, उसमें उनके 8 साल के बेटे ने उनके समर्थन में फेसबुक पे पोस्ट डाल दी थी। उस फेसबुक को बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था और कुछ विशेष धर्म के लोगों ने उसका विरोध किया था और नजदीकी थाने में समझौता कराया गया। पुलिस द्वारा उन दोनों के बीच में आपस में समझौता कराया गया। उसके बाद कन्हैया लाल ने ये एप्लीकेशन दी थाने में कि उनको अपने जीवन को खतरा महसूस हो रहा है और इस पे पुलिस प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया और कन्हैया लाल का जो मर्डर दिन दहाड़े किया गया, रियाज मोहम्मद और गौस अहमद जी ने किया, इनका मर्डर किया और गला इनका उनके उस पार्टिकुलर ऑफिस में जा करके जहाँ टेलरिंग का काम करते थे, कपड़े सिलवाने के नाम पे जाके गर्दन इनका उससे काटा गया। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 28 वार के ऊपर किए गए हैं और इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म और सभी समुदाय के लोग न केवल आहत हैं बल्कि अंतर्मन से पीड़ित हैं कि क्या ये इस देश में ऐसा होना चाहिए, क्या ये इस्लामिक देश के रास्ते पे भटक गया है। कुछ लोग इसको आतंकी घटना की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर जमीनी रूप से आप देखेंगे, राजस्थान में 2014 के बाद से ये पार्टिकुलर धर्म को लेकर के हिंदू मुस्लिम में बहुत सारे छोटे बड़े बवाल होते रहे हैं। ये एक बड़ा विषय अलग रहा है कि जो आपके इसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट हो गया और सभी इस पे देख रहे हैं और सबकी प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो भी इन दोनों लोगों ने किया है वो किसी धर्म से मोटिवेट होकर किया है। पार्टिकुलर धर्म के लोगों का कहना है कि ये जो पूरी एक्टिविटीज की गई है ये मानसिक दिवालियेपन का उदाहरण है। सबके अपने अपने स्टेटमेंट आ रहे हैं और आप लोग इसको देख रहे हैं। आज हम लोग अगले 1 घंटे में जांच पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि उदयपुर हत्याकांड का आखिर जिम्मेदार कौन है। सोशल मीडिया जिम्मेदार है, राजनेता जिम्मेदार है, या वहां का प्रशासन जिम्मेदार है, या धर्म जिम्मेदार है। वास्तव में जिम्मेदारी है किसकी कि ये उस देश में जिस पंथ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अभी से अगर हम 5 साल या 10 साल आगे की कल्पना करें तो शायद ये बात जो आज हमें आहत करे, संभवतः अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे हम रास्ते पे तो
बहुत ही भयावह स्थिति होगी। इस विषय पे परिचर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा श्री अमित भादुरी साहब को, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। मैं पहले उनकी राय लूंगा, उसके बाद में क्रमवाही जो भी हमारे वक्ता हैं उनसे मैं बात करूंगा। अभी सर, जो हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में उदयपुर हत्याकांड का की जिम्मेदारी किसकी है, इस पे हम आपसे सुनना चाहते हैं। Thank you. Thank you, Ajay ji. And good afternoon to every members of the panel. I must correct one thing, Ajay ji. I live in the UK and not in the USA. Okay, sir. So please make a note of that. Yeah, now sure, I will start what I wish to say. Sometimes I feel that are we Hindus staying in India or Afghanistan? Vasudev Kutumbakam, this ideology have destroyed Hindus. We need to get rid of it. Now I will come to the main point, what you have asked me, that who are responsible for this? Yes, Islam is undoubtedly primarily responsible for this, because I'll tell you straight, Islam is a religion of violence, terrorism, and women's subjugation from day one. But we Hindus must now take the responsibilities. If we don't, we'll be finished in a few years' time. 80% to 81% population of India are Hindus. How come 17 to 18% Muslims carry out consistently killing, raping, arsons, burning our properties for year after year? How? So there must be something somewhere wrong with us, Ajayji. If we are that is we are not united. You see, I have lived in the European countries for a long time. I've seen the difference. In the European countries, when it comes to national interest, all parties, opposition, ruling, they get together. In India, every opposition parties, and I will name you, Congress first, TMC, NCP, CPIM, JDU, SJDU, TRS, TDP, AIM, IM, are all go against it. If there is anything good done by the BJP or anything new policy in the best interest of the country is brought into the parliament or or proposed in the parliament. And that's the problem. You see, this business of Hindu killing and have been going on for quite some time. It started in few years ago. You see, since 12th May 2021, over 75 BJP workers have been killed in Bengal, in West Bengal, right? Periodically, once a month, once in 3 weeks, BJP worker is killed in Kerala. In Delhi also, quite a few BJP workers and Hindus, and now it is spreading in other states. Now, not only we Hindus have a responsibility, but what about the Prime Minister? What about the hoster? What about the President? You do not hear a word from any one of them. Is it possible in any other country in the world? I tell you, the day they put fatwa, the Muslims, on Nupur Sharma, since then not a word has come out from the Prime Minister. The day the poor Kanhaiya was murdered brutally, the PM, Prime Minister, was hugging the President or Prime Minister of UAE, United Arab. How does that go good, well with the Hindus? It has got a tremendous demoralizing factor on Hindus. They got elected by totally Hindu votes. Muslims don't vote BJP. Muslims don't vote Modi. Muslims want to kill him. And still all the way he goes out to help Muslims in many different ways. And that is something we got to address. We got to speak out in order to protect not just ourselves. Think about our children, grandchildren, and their children. What is going to be their future if Muslims or Christians get power? We got to speak out. We got to
come out. And that is why I've just said straight that from day one, Islam is evil. But what about, what are we doing to protect ourselves and our future generations? BJP has got half-hearted approach. They come out, they get elected on the Hindu votes totally. But when it comes to really standing by for Hindus, they do very little. I have to say that honestly, even as an ardent BJP supporter, promoter, and I have donated enough sum of money to BJP funds. And still I will say that the buck stops with the PM and the HM and the president. And I will not take much time. PM is too much absorbed with Gujarat, with Gandhi, Gujarat, Ambani, Adani, Madani, and you just name it. And if something slightly goes wrong, he's immediately there, but he does not pay same attention, interest, or anything for any other state. As I said, 75 people, BJP workers, all of them have been killed since 21st May 2021 in Bengal. Not a word has come out from the PM. And just to finish it up, Ajayji, I will say that, you see, to many Hindus, they can't speak out because it's very difficult in India to speak out because you could be the target of your entire life. Is not only just gone, it affects the families and the children and the grandchildren and the society. We got to make sure that, you see, we have seen the rule of our PM for last 8 years. That is